जो कारो जो रेसिडेंशियल स्कूल है, हम लोग शी योमी में पढ़ता है, पीडी सर्कल के अंदर में रहता है। तो ये कारो रेसिडेंशियल स्कूल जो शुरुआत इस तरह का होता है, इन 1975 जो कारो स्कूल जो है एलपी स्कूल में जो उद्घाटन होता है, एस्टेब्लिशमेंट होता है, ये जो है वेस्ट एंड के अंदर में था। उसके बाद जो इन 1988 कारो जो है अपग्रेड होके आपका इंटर ब्लेजेस स्कूल में होता है। तो इसके बाद 2014 में अगेन जो अपग्रेड होता है रेसिडेंशियल स्कूल फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए जो सरकार के द्वारा होता है। तो इन ईयर 2014 में जो स्कूल रेसिडेंशियल स्कूल में कन्वर्ट होने के बाद वो जो योमकेन बागरा नामक एक मुसल वार्डन जो है वहाँ में पोस्टेड होता है। तो उसमें वो जो है ऐसे स्कीम से, और जो इसमें लड़का और लड़की रहता है, एक जो लड़का मुसल वार्डन वहाँ में सरकार द्वारा पोस्टेड होता है। तब तक 2014 से लेकर 30 अक्टूबर 2022 तक वो वहाँ में मुसल वार्डन के रूप में काम करते हैं। तो ऑन डेटेड 27 अक्टूबर 2022 को 5 व्यक्ति जो कॉम्प्लेनेंट जो तादाम सामनाम के द्वारा वो ट्विन बच्चे को जो उसमें जो है गलत व्यवहार होता है उसके लिए जो एसएमसी और जो उनके गांव बुरा को इन्वेस्टिगेशन के लिए बताया जाता है। उसमें जो है 29 अक्टूबर 2022 को फिर उन लोगों ने मीटिंग करता है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ तरी तापो एसएमसी मेंबर जो कारो रेसिडेंशियल स्कूल के, और गांव बुरा लोग उसमें मीटिंग करता है। उसके द्वारा उसमें बहुत कुछ मतलब जो इलीगली जो यमकेन द्वारा जो क्या वाला रेप, सेक्सुअल असल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट इस प्रकार का जो गुने पाया जाता है। तो 30 अक्टूबर को जो है उसका द्वारा जो सडनली मतलब अचानक जो है 30 अक्टूबर को जो है फिर तातो पीएस से जो पुलिस टीम आ जाता है। तो उसमें उन्होंने एसएमसी की तरफ से तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। फिर अपना से वो कई रिसोर्स से पता चला होगा या पेरेंट्स के द्वारा या किसी सोर्स से पता चलने के बाद वहाँ आता है जो यमकेन बागरा को रेस्क्यू के लिए आता है। तो उसमें कारों से जो है उसको उठा के लेके जाता है पुलिस द्वारा। तो 30 अक्टूबर को नेक्स्ट डे फिर वापस आता है लोकल में, जिसको समझौता करेगा जितना जो इशू हुआ है उसको कोशिश करता है उस बागरा की टीम और उनके जो भाई बहन सहयोग बोर्ड पर आके फिर कम्युनिटी हॉल कारों में मीटिंग किया जाता है उसमें, लेकिन लोकली सेटल करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं होता है उसमें। जबकि एब्सेंट था आपका पेरेंट्स जो कंप्लेन जिसका जो व्यक्ति का जो परिवार फैमिली जो है एब्सेंट था, उसमें जो मीटिंग करने की कोशिश करता है। फिर उसमें जो है और जो है जो इशू जो है बढ़ जाता है, कहीं ना कहीं बहुत से इशू कई प्रकार का जो आ जाता है। तो उसके बाद तो वहाँ से फिर तातो वापस नहीं जाके, ताना में वापस नहीं जाके फिर यमकेन बागरा जो है उसका साथी हो उसको लेके वहाँ से भगाने का जो साथ देता है, वहाँ से जो 30 अक्टूबर को गायब हो जाता है। तो उसके बाद जो उस एसएमसी जो इंफॉर्मेशन देता है तो उसका जो पेरेंट्स को बताता है, तब एफआईआर जो 1 नवंबर 2022 को जो है ट्विन डॉटर के पिताजी जो पेरेंट्स जो है वो जो है एफआईआर पीएस मनेऊ में लॉन्च करता है। तो उसके बाद एफआईआर जो है रजिस्टर जो है आपका 2 नवंबर 2022 को आपका पॉक्सो एक्ट के तहत जो है रजिस्टर होता है। तो इसका बाद होने के बाद
नवंबर 2022 को एसपी शी योमी, डॉक्टर एरिक वागरा जो उसमें आता है, इस पर वेरिफिकेशन करता है तो उसमें जो है मल्टीपल जो है विक्टिम्स जो है उसको रिवेल हो जाता है। तो उसके बाद मेडिकल टीम जो है 6 नवंबर 2022 को मेडिकल टीम भी होता है और मरीगांव पहुंचता है। पहुंचने के बाद जो जितना जो मेडिकल की तरफ से जो काम करना था उसमें होता है, तो उसमें होता है। उसके बाद 9/11/22 को फिर से यहाँ से जो स्टेट लेवल से चाइल्ड कमिश्नर जो आता है टीम वहाँ कारो पहुँचता है। उसमें जो है कई प्रकार का जो आपका जो स्टेटमेंट और जितना जो स्टेटमेंट होता है और कई प्रकार बच्चों को पूरा 21 बच्चों को पूरा वहाँ में स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। तो 2 दिन 9-10 में 2 दिन बैठ के उसमें पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन वहाँ से दे देते हैं। तब तक जो है योमकिन बागरा जो एक्यूज वहाँ से फरार हो जाता है और कुछ भी नहीं मिलता है। तो 42 डेज के बाद अब योमकिन बागरा को यहाँ पता चला है कि डैनियल पार्टिन के साथ आपका पापू नाला ईटानगर में जो अरेस्ट होता है। तो मैं ये इस सिलसिला में आया हूँ, तो इसे मैं अपील करना चाहूँगे सरकार जो हाई कोर्ट से, ऑनरेबल हाई कोर्ट से, इस तरह का जो संगीन जो अपराधी को खुले गुन्ना हम लोग के लिए खतरा से काली नहीं है और इन बच्चों के लिए भी खतरा से काली नहीं है। और इनको और बेल दे के आज सुनने में आया, हम लोग तो पता नहीं चला और सुनने में आया है बेल में घूम रहा है। तो घूमने के बाद जो बच्चों जो है कई तरह से बच्चों का माथा मेंटल ट्रॉमा हो जाता है, क्योंकि आज ट्रॉमाटाइज हो कि बच्चा जो है सही तरीक़ा से जो है बच्चों पढ़ नहीं सकता, स्कूल भी नहीं जा सकता। इस तरह का जो है समस्या हमारा जो उसमें हो रहा है। और मैं यही कहूँगा जो जल्द से जल्द ये बेल जो अभी बेल है वो कैंसिलेशन किया जाए और इनको हमें जस्टिस देना है, जस्टिस चाहिए और हम इसको कैपिटल पनिशमेंट देना चाहिए। मेरा तरफ से ये मांग है, एज ए इशू चेयरमैन मेरा तरफ से ये मांग है और इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल किया जाए। आज जो देखने को आया है 9 महीना हो गया, अभी तक फास्ट ट्रैक कोर्ट भी नहीं हुआ। तो आपका देखने से 1 साल का अंदर में जो पोक्सो का जो केस जो है 1 साल का अंदर में केस जो ख़त्म करना है, तब तक देखने से आज देखा है तो मतलब केस अभी ट्रायल ही नहीं हुआ, जो कि 227 दिन 280 डेज हो चुका है। तो और इसमें भी हम देखा गया कि एक ट्रायल जो डेट शेड्यूल किया जाए ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा, उसमें देखा है 3-4 अक्टूबर को दिया गया है। 3 और 4 अक्टूबर को दिया गया है। उसमें देखने से पूरा हॉलीडे होता है वो महीना में, तो उसमें तो कभी केस होगा नहीं है। इसलिए मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट से मैं अपील करता हूँ इस जो डेट को प्रीपोन किया जाए, रीशेड्यूल किया जाए। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ उसमें, क्योंकि देखा गया तो उसमें तो पूरा हॉलीडे ही ज़्यादा हॉलीडे रहता है। तो इसलिए मैं सभी ये से अरुणाचली से और भारत के जो नागरिक से ये से मैं अपील करता हूँ, बेटी तो सबका है, आपका भी है, हमारा भी है, सबका बेटी है। इस तरह का जो संगीन जो घिनौना करने वाला को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए। मैं तो यही अपील करता हूँ। ये जो आपका जो क्रिमिनल है किसी जात और धर्म से कोई कम्युनिटी से कोई मतलब नहीं है। हम भी यही कहता हूँ, हम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को नहीं बोलता हूँ, ना पर्टिकुलर जात से, ना किसी पर्टिकुलर रिलीजन से, क्योंकि क्रिमिनल तो क्रिमिनल है ना, वो उस पर्टिकुलर आदमी को ही पनिशमेंट देना चाहिए, ताकि एक ये जो एक
इतिहास में रिकॉर्ड रहा है इस तरह का जो संगीन जो अपराधी वाला को कड़ी से कड़ी सजा दी। मैं यही मानो हाई कोर्ट से मैं दरखास्त करता हूँ। और डेट को रीशेड्यूल किया जाए। अभी तो हम बचा है, अब तक तो 9 महीना चल गया है, तो देखने में आया तो 1 साल होने के लिए 3 महीना बचा है। 3 महीना में तो अभी आपका हॉलीडे है, हॉलीडे होने की वजह से केस होगा नहीं, इसलिए मैं तो इस चीज़ को माना डेट को प्रीफंड किया जाए, जैसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ। To be very honest, perhaps they might not have expressed themselves, to the core of their heart. The words are not enough. Each, member of Shi Yomi district are in trauma, and we are going through a trying time. So firstly, I like to share and highlight a little bit of anecdote the victim children have faced. I like to share the miseries, the bitterness, the tortures they have faced since past 8 years, since 2014 to 2022. I'm having a goosebump at the moment. It's so difficult to even utter in the words. One of XYZ innocent children, she told me with her naive voice, she told me that she had been raped, assaulted every three times in a month. And every time she was yelling for the help, whenever she tried to express herself, whenever she denies the accused, Shi Yomi Bagra, he would threaten that little child that if you reveal the secret to your parents and to the world, I will cut you into thousands of pieces and throw you into the river. That's so terrible. Now, dear people of Arunachal Pradesh, imagine. Those children are so naive. Even, the incident took place a couple of years back perhaps, but even I met them 2 days back. I couldn't imagine what might have gone through them during that time. Not only that, sexual assaultment and rape wasn't confined to the children. The children, there was an activity scheduled day and night. In the morning, there was no teaching learning process in the classroom. Rather, in the classroom, Shi Yomi Bagra could discuss about certain vulgar, topic in the classroom. He never motivated, encouraged the children about the definition of education, about the importance of education. Rather, in the classroom, he used to flirt with those little naive, innocent children. This is very much painful, not only for the parents, but also for each one of us. And besides that, the children were, sent to jungles to collect mushrooms. Children were taught how to steal animals, chicken, goat, pig, from the neighboring village and bring to him. Children were made to do his utensils, wash his clothes, do his kitchen garden. This is so terrible. And besides that, these children were, the children used to cook food for him. And I'm little bit of feeling shivering to share this. During when children used to cook food for him, Yomi Bagra used to come stand in front of that XYZ children and touch her body and her private part in the kitchen itself. And apart from that,
in the night time after the dinner, children were invited one by one in his bedroom. They were forced to watch porn videos. And you know what he said? Look, in the video, those couples in the video are you and me. We can enjoy it. And children, these innocent children, they didn't know understand what does the porn means. They don't know, and he made those children to kiss him, massage his body with the oil, massage his private parts. And these children were, even I could not hear the story. The story is beyond this. Apart from that, many children told me that many a time, they found themselves lying on the warden's bedroom. When they were so surprised, the moment they wake up in the morning, they were naked. Even the warden was naked, lying in their bed together. And these little naive children, they started suffering from body pain, bleeding, and when the little kids complain him, he don't take it seriously. He says, "You are lying to me," and gives him a tablet. This is so painful for each one of us. And besides that, couple of girls told me that many a time in the late night, they used to, children were, forced to drink alcohol, cook for them, and they were taught how to play housey, how to play cards. Children were involved. And also, one XYZ, little girl told me that many times this XYZ, sometimes he invite both the little boys and little girls together and undress them and dance together, and he would sit and enjoy. This is so terrible, isn't it? And one XYZ girl told me that, one day, the accused person, Sri Yomi Bagra, asked him, "Are you having period?" And the little girl did not understand what does the term period means. "No, I don't have." Then Bagra would say, I don't like girls who have period. This is so, pathetic. And many a time, these children are forced to take medication after dinner. And some girls were tired of having those tablets and those, syrups. And whenever they denied to have those medication, the accused Yomi Bagra would say, "My dear little kids, this is multivitamin. If you have this, your health will be good." So these little innocent kids, they don't have a choice but to take the medication. And once they take the medication, they are in deep sleep. So every time since 2014, the children were raped, assaulted. Their voice were suppressed, the voice of children, by giving them severe punishment. By threatening them, "If you reveal, I'll make you fail in the exam. If you reveal, I will do the same with your little ones in the class, that is in the class 1. Basically, the accused person, Sri Yomi Bagra, used to target the senior ones, class 4, class 5. And one XYZ little girl, she told me that
during the time of farewell, the teacher, see, being a teacher, he would suggest those little kids that for the farewell you should wear sexy dress. And look, in a village like Monegong, Karo village, where will you get those sexy dress? And when they say, no, we don't have any dress to wear, Yumken Bagra would bring a scissor and cut their clothes, modify, give a sexy look, and make them wear. And dance, give a sexy move, do some sexy dance in the farewell. Can you imagine any teacher could do that? He has, this Sri Yumken Bagra has completely shattered the definition of teacher, defamed the identity of a teacher, because I am also a teacher. I know how much I love my student. You know what? One of XYZ student told me that these children in the picnic, they were made to undress and take bath in the river, and their nude pictures were taken. Imagine these little girls who don't have access, their parents are uneducated, and we don't have access to the other part of the world. No internet, no social media, no nothing. Where the society is so conventional. They could not share the pain, the body pain. I cannot even imagine. Even as a grown-up lady, when I have a period pain, I cry and I take a tablet. Now you imagine the people of Arunachal Pradesh, a little girl, what might have gone through the child when we grown-up lady like, while suffering from period pain, take a tablet and take a rest for one day. My words in this press briefing is not enough to share their terrible, horrifying story. Each one of you had to walk into their shoe, feel it. And one of the XYZ students told me that the student during the vacation, they were given some task. They were, students were forced to bring jungle meats, vegetables from the vacation, and those who failed to bring those eggs, local chickens, the fish, they were given punishment. They were threatened that you will not get sufficient food. You will not able to avail the hostel facilities. Is it possible a teacher can do that? This is too much. He was a warden and he was a teacher. This is so surprised. Their pocket monies were snatched. Imagine being a warden or teacher snatching a little girl's pocket money, and he used to utilize those pocket money to buy vegetables, the local meals, and take back to Alo. What does it mean? It means that Sri Yumken Bagra has underestimated the education system, the people, the parents, the entire citizen of Shi Yomi district. So, stories are lengthy. I would like to add on to some other thing. See, at the moment, at this right moment, as our brother has highlighted the chronology of the case, the sad part, the painful part is that the accused person is roaming freely in the market. He is in the bail under section 435 of CPC 1973. We are so confused now.
As we have heard that, according to POCSO Act 2012, such accused persons are non-bailable, and such accused person such case has to be within disposed within 509 days. That's 1 year and 5 months. Now it's been 270 days, even the trial haven't started. Therefore, I request the Honorable Court to prepone the trial which has been given in the month of October, as October is a month of festival, it's a month of holiday. And it is insecure, a criminal roaming openly in the market, insecure for the life of our parents, the victim children, and people who are supporting this case. Anything can happen. And besides that, because of delay in the justice, delay in the trial, entire community of Shi Yomi district are in pain, are in trauma. Everybody is waiting when the government, when our honorable court will give justice. Besides of such criminal person, children are not getting motivated to study anymore. They are unwilling to study, they are unwilling to go to school, interact any teacher. They have lost faith in the very notion of teacher, which is why there is decline in the enrollment rate. And I think till now, in the entire state, according to 2018 and 19 data, there are 311 schools have been defunct. And perhaps this could be one of the causes, isn't it? So, the very notion of these causes, this very scenario, reflect the idea of Beti Bachao, Beti Barao, stated by our good government. I also request our government, NGOs, community-based organizations, student unions, intellectuals, and each citizen of Arunachal Pradesh to come forward in the journey of our battle. This battle is not the battle of only the victim child of Karo village. It is the battle of our state. Dear people of Arunachal Pradesh, we the Shi Yomian need your love, support, encouragement. We need your power for the early justice.